Now let's take a look at what are the contents, what is included in a business case. So in a business case, there are quite a number of things, like the first thing that is usually there is an introduction. Introduction वैसे तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो सकता है जिसमें आप बता सकते हैं कि जी प्रोजेक्ट है क्या, उसमें क्या डिटेल्स हैं. However, in a business case, you write the details of the situation and what is basically the idea behind going for this project. Once you have done that, then it is followed by an executive summary. Executive summary, we understand that it's basically a summary of whatever is there in the document. So we'll probably make it at the end. However, it is in the report, it is placed at the top. Apart from this, there is a detailed description of the current situation. Now, for example, if you are proposing a business process change project, a business process re-engineering project, so you have to then identify how things are moving today, what are the problems that the organization is facing, or what are the costs that are associated with that, and what kind of opportunities are we missing when we are using the following system. So if we are going to change this, what is going to happen, uska thoda sa ek description de diya jata hai. So it gives the reader an idea of why are we going for a certain project. Once you have explained the current situation, then comes the various options. There is a possibility that one particular problem or one particular situation can be solved in more than one ways. For example, if we decide that we are going to have a customer relationship management system implemented in our organization, then one option is that we can buy a ready-made software, off-the-shelf software. There are companies that have made one. The other option is that we can develop a software that will be developed by our own team and that can be implemented. And the third option is that we can outsource the whole CRM, customer relationship management ka pura package hum outsource kar sakte hain with a call center, including the software, and we have to pay certain amount for that as well. So then if we have a situation in hand, we have options that are available to us for solving that, और वो फिर आप यहाँ पे explain करते हैं इस document में, business case में, कि वो options हमारे पास क्या क्या हैं. Once we have identified the various options, अगला पार्ट बड़ा सिंपल सा है. अगला पार्ट ये है कि हर ऑप्शन की कॉस्ट क्या होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेडीमेड CRM खरीद रहे हैं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए हार्डवेयर कॉस्ट क्या आएगी, उसकी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होगी. इफ वी आर डेवलपिंग अ सिस्टम बाय आवर ओन सेल्फ, तो फिर उसमें कॉस्ट का क्या proportion होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग चाहिए होंगे, and so on so forth. And finally, if we are outsourcing it, what are the costs, and then what are the benefits. So the cost and benefit analysis is crucial before making any kind of project decisions, और यही basically आप business case जब बनाते हैं उसमें determine करते हैं. याद रखिएगा, business case अगर आप इसकी common sense वाली तशरीह समझना चाहें, so it is basically an answer to all those questions which an investor would ask while giving you the money for a particular project. आप अपने फादर से कहते हैं कि जनाब मैं एक जो है वो घर में एक और रेफ्रिजरेटर खरीदना है हमने, और उससे हमें ये मसले हमारे हल हो जाएंगे, तो वो भी आपसे 2-3 सवाल तो पूछ ही लेंगे, भले वो आपसे बहुत प्यार करते हो. Why? Because there is money involved in that. So therefore, organizations में जब आप management से कहते हैं कि जी okay, let's invest some 10 million rupees on a certain project, they need some answers, and those answers are actually given by the business case. So अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया. बिजनेस केस में सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन बनाया, फिर उसकी एग्जीक्यूटिव समरी है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिचुएशन डिस्कस किया कि अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है. फिर हमने ऑप्शंस देखे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसका ये हल हो सकते हैं इस सिचुएशन में, एंड उसके बाद हम गए हर ऑप्शन के कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पे. जब हमने ये कर लिया तो फिर हम आए इम्पैक्ट असेसमेंट पे. नाउ इम्पैक्ट इज अ वर्ड that can have multiple meanings in different situations, but अगर आप इसका बिल्कुल सिंपल डिटेल में जाएं तो हम देखेंगे कि हम जिस ऑप्शन पे भी जाएं उसका ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी कॉस्ट पे, उसके तमाम स्टेक होल्डर्स पे, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, क्या इम्पैक्ट हो सकता है.
फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ द कॉल सेंटर, तो इसको हमारा स्टाफ, इसको हमारा मे बी अगर लेबर यूनियन है तो लेबर यूनियन, अगर हमारा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे बैंक्स हैं एंड ऑल दैट, वो इसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्या हमारा कस्टमर, जब उसे पता चलेगा कि वी हैव आउटसोर्स्ड आवर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है? सो फॉर एवरी ऑप्शन दैट वी आर ऑप्टिंग फॉर, उसका ऑर्गेनाइजेशन पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और उसके मेजर स्टेक होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट होगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट इन डिटेल. वंस वी हैव डन दैट, इसके साथ साथ हमें रिस्क असेसमेंट की भी डिटेल में जाना पड़ेगा. आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क. रिमेंबर व्हाट इज रिस्क? Risk is basically the probability of something going wrong and its adverse impact on us. So risk is not only the probability that something will go wrong, it's basically how, if that happens, how it is going to affect us. Now assessment का मतलब क्या है? That we should be able to analyze and identify that what are the possible things that might go wrong with each of these options. अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें और हम कहेंगे जी हमने अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, हमने लेट्स से एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीदा और उसके साथ हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया और काम करना शुरू किया. व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उसको सही तरह इम्प्लीमेंट ना कर सकें. देयर इज अ पॉसिबल रिस्क ऑफ हैवी रिलायंस ऑन एन आउटसाइड सप्लायर, और हो सकता है वो हमें अच्छी सपोर्ट ना दे सके. रिस्क है. अगर हम इसको खुद डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम टाइमली मैनर में इसको कंप्लीट ना कर सकें, डिले हो जाए, मुमकिन है, एक चांस है. और इसी तरह से जब आप इसको आउटसोर्स करते हैं तो उसके अपने रिस्क्स हैं. सो जब आप, प्लीज रिमेंबर, हमने ये शुरू में भी बात की थी, दैट टू बी फोरवार्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड. जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पॉसिबल चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं, तो फिर आप उनकी तैयारी भी कर लेते हैं. ये वैसे ही है जैसे अगर मुझे पता हो कि सुबह मैं निकलूंगा तो बाहर बारिश हो जाएगी, तो मैं अपने साथ छतरी का इंतजाम रखूंगा. अगर मुझे पता ही ना हो तो फिर प्रॉबेबली मैं बगैर छतरी के बाहर निकल जाऊंगा और बारिश में जो है वो मेरा नुकसान होगा. सो रिस्क असेसमेंट बेसिकली हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल रिस्क. वंस वी हैव डन ऑल दिस, हमने तमाम ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर लिए, उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया और हर ऑप्शन का रिस्क असेसमेंट भी कर लिया. तो now is the position where you can recommend that out of the 3, 4, 5 options जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से कौन सा वाला सबसे ज्यादा सूटेबल है. whichever is suitable आप उसको जो है वो रिकमेंड कर देते हैं. और बिजनेस केस में इसके अलावा, यानी अदर देन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स दैट वी, ऑल दीज थिंग्स दैट वी डिस्कस, आप कुछ अटैचमेंट्स भी लगाते हैं. वी कॉल देम अपेंडिसेस. अपेंडिसेस में आप अगर आपने कोई कोटेशंस ले रखी हैं, अगर लेट्स से मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, उनके कोई आपके पास डिटेल्स हैं, अगर कोई जियोग्राफिकल लोकेशंस का मामला है तो उनकी कोई फोटोग्राफ्स हैं, वो सब आप इसके अंदर जो है वो अटैच कर देते हैं, सो दैट whoever is evaluating, whoever is going to decide about this project, उसके पास उन तमाम पॉसिबल सवालों का जवाब हो जो वो पूछना चाहता है before going for the project.